Hello, Assalamu alaikum students. This is your okay. So, hello, Assalamu alaikum students. This is your teacher Azka, and today we are going to discuss about the past paper. Okay. So, hello, Assalamu alaikum students. This is your teacher Azka, and today we are going to discuss about the A levels accounting paper 3, and this is related to financial accounting. And this is related to your freshly May June 2023 series. And okay, so this is your paper 3, and it consisted on basically 3 questions, and each question carries 25 marks. So there are a lot of questions in one question, like there are a lot of questions related to your theory and related to your practical question. So this is your paper 3 variant 2, and you have 1 hour 30 minutes for all question. It means that you should spend 30 minutes on each and every question. Okay. So in today's lecture, I am going to discuss about the question number 1, the very first question of this paper. Okay, so students, I think we should just take a break because of Azan. So just respect the Azan. So that is why for now I am just keep quiet, and after some time I will discuss. Okay. So the first question is about the non-profit organization. So first of all, we should just, I am just recommending you that whenever you are going to take your accounting exams, so first of all, you should do the first thing when you are going to start your paper. Just read the question first, okay? After reading the question, you should go to the your question, the source, okay? Because if you would not read the question, so you can say that analyze or understand that which amount you should record in which account. So that is why, okay? So paper I have solved it already. So the paper in paper 3, your first question is related to non-profit organization. So in first question, what the examiner says, prepare a statement to show the profit or loss for the year ended 31st December 2022 for the cafe. Okay, so if you know, if you have studied non-profit organization, so you maybe understand that what is the meaning of this question. Basically, there is no profit or profit for the non-profit organization. Basically, there is only one profit in non-profit organization, and this is related to your cafe. For example,
आपको शायद पता हो, अगर आपने ये स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कैफेज के लिए होता है। कैफे फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट्स, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द if we are talking about the profit and loss statement for club, so it doesn't like this. Basically for club we have to make income and expenditure account. It is just like profit and loss account. Okay, but there is a slight difference in between both. The difference is basically क्लब के लिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम रेडी करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम्स आती हैं एंड एक्सपेंडिचर आते हैं। देयर इज नो इन्वेंट्री, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ सेल्स। Why? Because club is basically giving the services to the customers. So whenever it is about the service business, so you should include only income and expenses in income and expenditure account. And the second reason is that basically the profit which we have earned from the club, it is not called profit. It is surplus for the year if it is a positive amount. And if it is negative amount, so we would call it deficit for the year. Okay. But in cafe, because cafe में जब cafe का हम profit and loss स्टेटमेंट जो है वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑफ कोर्स इन्वेंट्री इंक्लूडेड है। इफ यू आर ओपनिंग अ कैफे, सो इट मींस दैट यू हैव टू sell some like coffee or maybe pastries and anything else. Okay, like there are a lot of refreshments you have to serve your customer, so that is why there would be a cost of sales. But in the case of income and expenditure account of club, cost of sales never included. Okay. Okay, so हमने क्या करना है, prepare a statement to show the profit or loss for the year ended 31st December 2022 for the cafe. So first of all, we should have to we have to write the statement of profit or loss for the cafe for the year ended 31st December 2022. तो statement of profit and loss में सबसे first चीज आती है which is revenue. Okay, and after that is cost of sales like opening inventory, purchases, closing inventory, and all these things. And after that we have expenses. And expenses, there are a lot of expenses. The expenses should be related to the cafe. The expenses which is related to the club will not include in the profit or loss statement for the cafe. Okay, तो फर्स्ट में हमारे पास टास्क है कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाना है। ओके, सो आफ्टर दैट प्रिपेयर द क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट है पार्ट सी में, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट इन द एक्यूमुलेटेड फंड। ओके, एक्यूमुलेटेड फंड में जो मूवमेंट है वो हम बताएंगे फॉर द ईयर 2022। ओके, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैपिटल वो मनी है विच इज इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर्स इनटू द बिजनेस। बट इफ इट इज अबाउट द एनपीओ, सो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हैज बीन चेंज्ड। वी यूज accumulated fund instead of capital. So this is the main difference between this. Okay, so now I am moving forward to the question. Okay. So NT Sport Club runs a gym and operates a cafe. The treasurer provided the following list of balances for some accounts. Okay, ठीक है। So first of all, यहाँ पे आपके पास जो चीजें अवेलेबल होंगी, इनमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, आपके एसेट्स, ठीक है, आपकी लाइबिलिटीज, ओके, ठीक है, योर इन्वेंट्री,
because inventory is also your asset. So all type of assets and all type of liabilities would lie in this column. ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर दो तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आपके पास लास्ट ईयर और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. 31st और 22 के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं. 31st दिसंबर 2021 की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लब इक्विपमेंट. सो क्लब इक्विपमेंट का यहाँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, बिकॉज हम जो यहाँ पर बेसिकली बनाने जा रहे हैं अपना फर्स्ट अकाउंट वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर कैफे. सो इसलिए क्लब इक्विपमेंट के साथ हमारी कोई भी काम नहीं है यहाँ पे. ठीक है, कैफे इक्विपमेंट. ओके, कैफे इक्विपमेंट में हमें कैरिंग वैल्यू दी हुई है लास्ट ईयर की विच इज 22,000. सो व्हाट इज कैरिंग वैल्यूज? कैरिंग वैल्यू इज योर नेट बुक वैल्यू. नेट बुक वैल्यू मीन्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो कॉस्ट जितनी भी है आपकी, जितने भी आप कैफे इक्विपमेंट हैं उनकी जो कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो आपके पास एक एसेट की नेट बुक वैल्यू आती है उसमें कैरिंग वैल्यू. तो हमारे पास लेटेस्ट ईयर की 2022 की कैरिंग वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बट वी हैव कैरिंग वैल्यू ऑफ 31st दिसंबर 2021. अच्छा, कैफे वेजेस इन अरियर्स, क्या इसका काम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में? ऑफ कोर्स, वेजेस इज काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो ये भी इंक्लूड होंगे. कैफे इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन फाइन करनी है, ये भी उसमें इंक्लूड होगी. हम अभी सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूडेड है. हीटिंग एंड लाइटनिंग इन एडवांस, देखें यहाँ पर आपके पास जो एडवांस में अमाउंट पे कर दी गई थी 2022 की वो भी इंक्लूडेड है. ठीक है, और 31st 2021 की जो एडवांस पेमेंट इंक्लूड कर दी गई थी वो भी है. ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे. सब्सक्रिप्शन ओइंग, अच्छा इसका कोई ताल्लुक नहीं है बिकॉज दिस इज आर इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इनकम इंक्लूड नहीं होगी. और दूसरा ये कि सब्सक्रिप्शन ओइंग हो या सब्सक्रिप्शन प्रीपेड हो, ये दोनों ही क्लब के साथ रिलेटेड हैं. या आपका कैफे के साथ कोई काम नहीं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो ली हुई होती है कस्टमर्स ने वो क्लब के लिए ली होती है. दे डोंट परचेज एनी सब्सक्रिप्शन फॉर द कैफे. ठीक है, तो these two amounts, like these four amounts basically is not related to our current question. कैफे इन्वेंट्री ऑफ कोर्स ये इंक्लूडेड है हमारे इस टाइम पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसके साथ रिलेटेड है. नेट टोटल यानी कि इसका टोटल सबका बताया हुआ. चलिए खैर आगे चलते हैं. नेक्स्ट आ जाए. द ट्रेजरर आल्सो प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ द बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2022. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट की एक समरी है. बेसिकली आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है. ठीक है, दिस इज योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. इट इज जस्ट लाइक योर कैश बुक. ठीक है, तो कैश बुक नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस के लिए होती है. एनपीओ के लिए वी यूज द टर्मिनोलॉजी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बट if we are talking about the features of a cash book, so this is very similar to that. So we have balance BD, it means that we have positive balance in our bank balance. Okay, एनुअल सब्सक्रिप्शंस हैं, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन भी हमारी क्लब से रिलेटेड है. लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये भी क्लब से रिलेटेड है. सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट है, सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट है. तो इसका क्या काम होगा? बेसिकली जब भी हमें फॉर एग्जांपल डिस्पोजल पे गेन या फिर लॉस फाइंड करना होगा, अगर लॉस है डिस्पोजल पे तो इट मीन्स के एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल गेन है तो उधर इनकम में जाएगा. ठीक है, कैफे टेकिंग्स, कैफे टेकिंग्स का मतलब क्या है? कैफे टेकिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो कितनी सेल्स हुई हैं. ठीक है, कैफे टेकिंग्स मींस योर रेवेन्यू, योर सेल्स व्हिच यू हैव जनरेटेड थ्रू selling the different what can I say, like product to the customers. Okay, so your revenue or sales. Okay, and on the credit side we have rent. So rent आपका हो सकता है related to your club and your cafe also. और यहाँ पे हम देखें आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो जो चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है
वो नीचे क्लैरिफाई की गई होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि रेंट किसके लिए है। ये जो 18,000 रेंट है, क्या ये क्लब के लिए है या फिर ये कैफे के लिए है? सो वी डोंट नो अबाउट दिस। ओके, सो क्लब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी कैफे से रिलेटेड नहीं है। हीटिंग एंड लाइटनिंग, इट कुड बी रिलेटेड टू कैफे, बट वी हैव टू read this sort of information. Like just we can see like there are a lot of information, there are a lot of notes written there, so we will discuss about this. Okay, purchase of club equipment, it is not related to this. Purchase of cafe equipment, payment for cafe suppliers. Okay, so what is payment for cafe suppliers? Basically this is your inventory, बिकॉज सप्लायर्स को अगर पेमेंट्स की हैं तो ऑफकोर्स सप्लायर से सिर्फ इन्वेंट्री ही परचेज की जाती है. सो इट मीन्स दैट इट कुड बी इट नॉट कुड इट it is basically your inventory. Okay, and you have balance sheet is this. Okay, at the end of the year. Okay, so आगे आ जाते हैं. हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, ऑल द कैफे सेल्स आर मेड ऑन अ कैश बेसिस, कैश रिसीव फ्रॉम द कैफेज बैंक. ठीक है, मतलब सारी कैफे सेल्स जो हैं वो बेसिकली कैश बेसिस पे की गई थी, और कैश को रिसीव किया गया और बाद में इसको बैंक में जमा करवा दिया गया. ठीक है, यानी कि कैफे से मिलने वाली जो भी रेवेन्यूज, जो भी, अच्छा रेवेन्यू जो हमारे पास होता है ना बेसिकली, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये है गलत फहमी के रेवेन्यू या सेल्स जो हैं वो उसमें शायद सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रेडिट सेल्स होती हैं. ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रेडिट सेल्स होती हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट. क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स दोनों को ही इंक्लूड करते हैं हम लोग रेवेन्यू सेल्स में. ठीक है, चलें. wages 14,400 were paid out of the cafe takings before they were banked. यानी कि कैफे टेकिंग्स जो हमारी सेल्स हुई थी कैफे से, उसमें से 14,400 वेजेस हमने पे कर दिए हैं अपने लेबर्स को बिफोर दे वर बैंक, यानी कि इससे पहले उसको बैंक में नहीं डिपॉजिट किया गया था. ठीक है. The cafe inventory at 31st December 2022 included items with a cost of 22,100 and net realizable value of $300. ठीक है, तो हमारे पास ये कैफे की जो इन्वेंट्री है बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बिकॉज यू कैन सी द डेट. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता है कि मोस्टली आपको नोट्स में ही अवेलेबल होती है. ओपनिंग इन्वेंट्री आपको ऊपर कहीं दी हुई होती है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपको नीचे नोट्स में गिवन होती है. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री विद अ कॉस्ट ऑफ 2200 एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ $300. ठीक है, तो नेट रियलाइजेबल नेट एनआरवी बेसिकली उसकी 300 है, और 2200 जो है वो उसकी कॉस्ट है, जो कि इन्वेंट्री आपके पास 31 दिसंबर 2022 को मौजूद है. Life membership was introduced on 1st January 2020. Each life members has to pay $2,000 on the date of admission. The life membership fee is to be transferred to income over 10 years in equal amounts. The number of new life members admitted each year is as follows. ठीक है, 2020 में introduce की, 2020 में 6 members include हुए, 2021 में 10, 2022 में 12. ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि लाइफ मेंबरशिप हमारे एक्यूमुलेटेड फंड का पार्ट होती है, और इसको इक्वली पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स मींस लाइफ मेंबरशिप का मतलब ये है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं, ठीक है, वो मेंबरशिप परचेज करते हैं. ठीक है, और उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने लाइफ मेंबरशिप परचेज की है, वो लाइफ टाइम हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, हमारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं. और लाइफ मेंबरशिप क्योंकि पता नहीं है कि किसकी कितनी लाइफ है, वी डोंट नो अबाउट दिस, तो लाइफ मेंबरशिप को खुद से ही कुछ ईयर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो इसको जो है वो 10 ईयर्स के अंदर कन्वर्ट किया गया. तो लाइफ मेंबरशिप बेसिकली 10 ईयर्स के ऊपर डिवाइडेड है. इट मीन्स कि ये जो 6 मेंबर हैं जो 2022 के अंदर आए हैं, सॉरी 2020 में आए हैं, और उन्होंने 2000 पे किया है, तो उन्होंने 10 साल की पेमेंट की है. ठीक है, और ये हमारे एक्यूमुलेटेड फंड का पार्ट होंगे, और हम जो आपकी लाइफ मेंबरशिप का 1 ईयर एक्सपायर हो जाएगा उसको हम अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे. ठीक है, इट मीन्स
कि अगर एक मेंबर ने 2020 में आपकी लाइफ मेंबरशिप परचेज की, तो ये टाइम जो है 2022 का चल रहा है, तो 2020 टू 2030 बेसिकली लाइफ मेंबरशिप है। तो 2020 टू 2022 इट मीन्स के 2 साल हम उसने यूज कर लिए हैं, तो हम 2 साल की इनकम हर रिस्पेक्टिव ईयर के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। जो बाकी यानी कि 8 साल रह जाएंगे उसको हम लोग अपने एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली लाइफ मेंबरशिप इज द पार्ट ऑफ आर एक्यूमुलेटेड फंड, बट जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाती टोटली, तो तब तक हम उसको इंक्लूड करते हैं, और उसका हर एक साल में जो उसकी इनकम का पार्ट होता है वो उस रिस्पेक्टिव ईयर में जाता है। खैर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। रेंट एंड ऑल्सो हीटिंग एंड लाइटनिंग आर अपोर्शनड 40% टू द कैफे एंड 60% टू द क्लब। ठीक है, यानी कि रेंट का रेंट जो दे रहे हैं और हीटिंग और लाइटनिंग का जो खर्चा है उसको पोर्शन कर दिया गया है। ये 40% जो है वो कैफे के लिए है और 60% जो है वो क्लब के लिए। तो इस वक्त हमारे लिए काम की चीज ये है। क्लब इक्विपमेंट विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 4800 वो सोल्ड फॉर $2000। ठीक है, तो ये मतलब लॉस हुआ है यहाँ पे। बट ये क्लब इक्विपमेंट है तो ये इसका पार्ट नहीं है कैफे का। Both the club equipment and cafe equipment are to be depreciated at 20% per annum using the reducing balance method. A full year's depreciation is provided in the year of acquisition and none in the year of disposal. यानी कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे हम अपने एसेट को, लेकिन जब हमने उसको एक्वायर किया था उस ईयर में उसकी फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ठीक है, तो कुछ कंपनी इस तरह की होती हैं जो जब कोई चीज परचेज करती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी परचेज करती हैं, तो दे डोंट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ परचेजिंग। ठीक है, जिस ईयर में उन्होंने परचेज किया है उस ईयर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करती। उसकी रीजन क्या है, वो ये समझती हैं कि अगर फर्स्ट ईयर में एक चीज को परचेज किया गया और अभी तक उसको यूज नहीं किया गया, सो देयर इज नो पॉइंट टू चार्ज एनी डेप्रिसिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर मशीनरी। ठीक है, सो दैट इज वाई। बट कुछ कंपनीज करती हैं और कुछ कंपनीज नहीं करती हैं। तो अगर कुछ कंपनीज पहले ईयर में चार्ज करती हैं तो फिर वो डिस्पोजल ईयर में, यानी कि जिस ईयर में उसको सेल कर दिया गया उस ईयर में उसको उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करती हैं। और अगर कोई कंपनी फुल ईयर यानी कि सॉरी नॉट फुल ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में अगर चार्ज नहीं कर रही है तो डिस्पोजल में चार्ज करती है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। चलें खैर, तो हम आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, तो रेवेन्यू के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू सम वर्किंग। ठीक है, वर्किंग जो है वो आपको क्यों करनी पड़ेगी, यहाँ पे वर्किंग इसलिए करनी पड़ेगी। अब जरा आप दोबारा से ऊपर जाएं तो आप देखें कि कैफे टेकिंग्स तो हमारी 55,000 है जो हमें डेबिट साइड पे नजर आ रही है। अच्छा, कैश बेसिस पे है। ठीक है, ऑल द कैफे सेल्स वर मेड ऑन द कैश बेसिस। सो इट मींस कि हमें कैपिटल एंड रिसीट अकाउंट देखना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम ये कॉलम्स नहीं देखेंगे। ठीक है, ये वाले कॉलम्स हम लोग नहीं देखेंगे, ये वाले कॉलम्स। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई ट्रेड रिसीवेबल्स होते तो हम देखते, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब भी वही है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब भी यही है कि आप यहाँ पे अपने क्रेडिट सेल्स देख रहे हैं, तो अगर कोई क्रेडिट सेल होती तो हम लोग देखते, बट यहाँ पे वो जो है इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अच्छा खैर, अब आप ये देखो कि कैफे टेकिंग्स आपकी 55,000 है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये सेकंड वाले में मैं ये यूज करती हूँ ब्रेड। ठीक है, तो सेकंड वाले नोट में देखें कि वेजेस 40,400 वर पेड आउट ऑफ द कैफे टेकिंग्स बिफोर दे वर बैंक। अच्छा, वेजेस पे कर दिए गए हैं। जो हमें ये कैफे टेकिंग्स थी यानी कि 55,000, इसके अलावा भी कुछ और हमारी रेवेन्यू था जो कि था 40,400। ठीक है, और ये वेजेस के तौर पे दे दिया गया। लाइक इस क्लब ने जो है वो अपने लेबर्स को वेजेस दे दिए रेवेन्यू में से। ठीक है, लेकिन अभी तक उनको बैंक में इंक्लूड नहीं किया, यानी कि उसको अभी तक डिपॉजिट नहीं किया गया था। देखो, अगर डिपॉजिट नहीं किया गया था और अगर वेजेस पे कर दिए गए थे तो इट डजेंट मीन कि हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बेसिकली ये हमारा रेवेन्यू ही है। ठीक है, बेशक वो वेजेस के तौर पे लाइक दे पेड टू देयर लेबर्स एज वेजेस, बट इट डजंट मीन दैट वी शुडंट इंक्लूड दिस बिकॉज दिस इज बेसिकली आवर रेवेन्यू। सो वी हैव टू इंक्लूड इन this amount 14,400 into 55,000 because this is our revenue.
सो दैट इज वाई वी हैव टू ऐड दिस। सो यहाँ पे आप देखेंगे ऐड किया हुआ वर्किंग वन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 55,000 कैफे टेकिंग्स हैं, 14,400 जो है वो वेजेस हैं, जो कि कैफे टेकिंग्स के ही थे बट बाद में वेजेस पेड कर दिए गए, तो इन दोनों को इंक्लूड किया आपने, ताकि जो टोटल रेवेन्यू है वो 69,400 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको उसके में इंक्लूड कर। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कौन सी हमारे पास, ऊपर जाए जरा, एसेट्स वाला कौन सा था, जहाँ पे हमारे एसेट्स हैं, ये पार्ट सारा आपका लाइबिलिटी टू एसेट्स वाला है। ठीक है, तो इसमें आप देखें यहाँ पे कैफे इन्वेंट्री दी हुई है एट कॉस्ट। ठीक है, तो एट कॉस्ट पे जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है तो 2021 वाली होगी, ना कि 2022 वाली होगी। 2022 वाली बेसिकली आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, 2021 वाली आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे आप देखें कैफे इन्वेंट्री एट कॉस्ट आपकी 5900 है। ठीक है, तो ये भी आप ओपनिंग इन्वेंट्री में इसको यहाँ पे इंक्लूड कर। ठीक है, अच्छा, परचेजेस, परचेजेस के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। परचेजेस के लिए हमें वर्किंग क्यों करनी पड़ेगी, उसकी रीजन क्या है। परचेजेस के लिए जो है वो हमें वर्किंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पे अभी देखा है, ये देखें, परचेज ऑफ पेमेंट फॉर कैफे सप्लायर्स। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुकी थी कि ये आपकी एक जो है वो इन्वेंट्री है, क्योंकि सप्लायर्स को पेमेंट करनी है तो इट मीन्स कि वो आपकी इन्वेंट्री ही होती है। सप्लायर को पेमेंट करने का मतलब ये कि आपने उससे कोई इन्वेंट्री ली हुई होगी और उसके बदले में आप उसको पैसे, उनको पेमेंट की है आपने। सो ऑफ कोर्स इट इज योर इन्वेंट्री। सप्लायर से आप कुछ और तो नहीं ले लोगे ना, तो इसलिए ये भी आपकी इन्वेंट्री का ही पार्ट होगा। अच्छा है, अब इसके अंदर जो है वो इन्वेंट्री कौन कौन सी इंक्लूडेड होगी, यानी कि कौन कौन सी हम इसमें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था, मैं पता 31,600 ही हमारे पास 2022 की परचेजेस हैं, तो ये इंक्लूड है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो आप आगे जरा जाओ, तो आपके पास यहाँ पे देखें कैफे पेएबल्स। सो कैफे पेएबल्स क्या है, आपके ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं, ट्रेड पेएबल्स वही हैं जो कि आपने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है अभी, और वो क्यों करनी, क्योंकि आपने उससे इन्वेंट्री परचेज की है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट सेल की है बट अभी तक पैसे नहीं मिले, क्रेडिट पे सेल्स की है। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो कैफे पेएबल्स हैं, अब इसको भी इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, आपके पास 2022 में जो लेटेस्ट पेएबल है वो है 14,800, और जो आपके पास 31 दिसंबर 2021 में जो पुराने साल का ट्रेड पेबल है वो है 16,600। अच्छा, इसमें अब ये देखें कि 16,600 वाले जो पेबल्स हैं, यानी कि ये वाली जो इतनी अमाउंट की इन्वेंट्री है, जाहिर सी बात है कि ये 2021 के अंदर ही इसको परचेज कर लिया गया होगा और उसकी पेमेंट भी कर दी गई होगी, ये इन्वेंट्री भी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेल हो चुकी होगी। सो इट मीन्स कि हम इसको फिर इस साल के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि 2022 के अंदर इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो ट्रेड पेबल्स इस ईयर के हैं वो इसी ईयर की परचेजेस हैं, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, और वो है 14,800। ठीक है, तो हम इस ईयर की जो परचेजेस हैं इन्वेंट्री को लेके 31,600, उसमें से पुराने ईयर की माइनस होंगी 2021 की। ये देखें, 31,000 जो इस ईयर की परचेजेस हैं, 31,600, 14,800 2021 की हैं, सॉरी 16,600 21 की हैं, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इस ईयर की परचेजेस में, क्योंकि ये ट्रेड पेबल्स दे दिए गए होंगे, इसको सेल कर दिया गया हुआ होगा। इस साल की जो है उसको इंक्लूड करेंगे 2022 की, जो कि है 14,800। ठीक है, तो ये देखें, इस सबको प्लस माइनस जो भी है इसको किया गया है यहाँ पे।
ओके तो परचेजेस की इस तरीके से हमने कैलकुलेशंस की है. आई जस्ट क्लियर्ड ऑल द थिंग्स टू यू. सो आफ्टर दैट, okay, so after that we have to deduct the closing inventory from this. Okay, so closing inventory के लिए हमने अभी ऊपर एक स्टेटमेंट देखी थी. तो ये देखें, closing inventory, I have already told you that it is always written in your notes. So closing inventory, the cafe inventory at 31st December 2022 include items with a cost of 2022 and a net realizable value of $300. So हम हमेशा अपनी इन्वेंट्री को नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर ही वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये वर्किंग 3 के अंदर जो है वो आप देखें. क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको यहाँ से मिलेगी कैफे इन्वेंट्री एट कॉस्ट. तो ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी, ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में से जो आपकी कॉस्ट वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको हम लेस करेंगे $2200 को, और 300 वाली जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाली इन्वेंट्री है उसको हम लोग ऐड करेंगे, बिकॉज इन्वेंट्री को हमेशा एनआरवी के ऊपर ही हम कैलकुलेट करते हैं. तो $6400 माइनस 2200 प्लस 300 जो कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, ये कॉस्ट पे है तो इसलिए इसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा. तो 4500 जो है, दिस इज बेसिकली आर क्लोजिंग इवेंट. ठीक है, so this is basically our cost of sales, 31,200. So now we have to find the gross profit, so we have to deduct cost of sales from the revenue, and we have $38,200 as our gross profit. Okay. Okay, so now we are going to calculate our expenses. So expenses हमारे पास wages हैं, rent है, heating and lighting है, और depreciation of cafe equipment है. So first of all wages. अच्छा, तो wages जो है, wages के लिए भी आपके पास working है. wages याद रहे कि 14,400 जो हमारे पास रेवेन्यू के पैसे थे, यानी कि जो हमारे पास रेवेन्यू था, जो हमने हमारी सेल्स थी कैफे से, ठीक है, वो 14,400 हमारे पास वेजेस हमने पे किए थे. ठीक है, और ये आपके पास इंफॉर्मेशन है 2022 की, सो इट मींस कि इसको वहां पर ही इंक्लूड किया जाना चाहिए. तो क्या कोई वेजेस के अंदर अरियर या फिर कोई एडवांस है? तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी. तो ये देखें, कैफे वेजेस इन द अरियर्स. ठीक है, आपके पास ऑलरेडी ये मौजूद है. ओके, सो अगर आप देखें तो कैफे वेजेस इन अरियर्स जो हैं वो आपके पास लेटेस्ट ईयर के 3250 हैं, एंड प्रीवियस ईयर के जो हैं वो आपके पास 2730 कैफे वेजेस हैं. अच्छा, 2730 अगर अरियर्स हैं, ठीक है, अरियर्स का मतलब क्या होता है? अरियर्स का मतलब होता है, अरियर्स कैफे वेजेस इन अरियर्स का मतलब ये होता है कि शायद आप फेमिलियर होंगे अक्रूड से. इट मीन्स क्या, आपने अपने लेबर से सर्विसेज ले ली बट अभी पेमेंट नहीं की. ठीक है, तो अक्रूड जो है वो आपके पास पुराने साल के 2730, तो क्या उसको इस साल में इंक्लूड होना चाहिए? माइनस 2730 को क्या इस साल में इंक्लूड होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं विच इज रिलेटेड टू 31st December 2022, ठीक है, and 2730 is related to 31st December 2021. So it means that this is not the expense for this year 2022. Okay, so that is why 2730 will be deduct from the $14,400, and the arrears which is related to 2022, it means that this arrear is related to that year, whether we paid it or not,
but this is related to that year's expense. So that is why this current year's expense. So that is why we have to add 3250 into our wages. Okay, so यहाँ पे you can see the working for. This is the working related to wages. Okay, so 14,400 minus 2730. This is related to 2021 wages, and plus 3250, which is related to 2022 wages. So we have 14920 wages. So after that we have rent. So rent is very simple. Basically, rent was $18,000, and 40% is basically being apportioned for the cafe. So that is why we have to multiply it by the 40%. So we have $7,200 as an expense for the cafe. So rent is $7,200. Heating and lighting again is very simple, but we have to add and subtract something like some amounts from it, because this is also has some year in advance. So now we have to go back to the person. So there you can see the heating and lighting in advance. So in advance means that we have paid some amount and in advance, but we didn't have service yet. So we have advance payment 1,900 for the previous year and 900 for the current year, $900 and $1,900. ओके 2021 में 1900 की जो पेमेंट की गई थी, डू यू बिलीव दैट अभी 2022 में हमने इसको यूज नहीं किया? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, बट $900 की पेमेंट 2022 में की गई है. सो इट मींस दैट दिस इज नॉट रिलेटेड टू 2022. इट विल रिलेटेड टू 2023. बिकॉज अगर आपने 2022 में कोई एडवांस पेमेंट की है, सो इट मीन्स दैट कि वो आप उसको नेक्स्ट मंथ्स के लिए यूज करो. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज 7,500. बेसिकली दिस 7,500 is heating and lighting expense. Okay, so 7,500 is heating and lighting expense. 900 is not, this is our asset, this is not our expense. So we should not include this 900 into our profit and loss statement. Okay, so we have to minus 900 from the 7,500, and we add 1,900 to that, because this amount maybe we have paid in 2021, but we used it in 2020, so 2022. So that is why it used in 2022. So that is why it will become the expense of this year 2022. ठीक है. So इसको हम यहाँ पे add. So you can see the working, this working, heating and light. Okay, so 40% apportion to the cafe. So that is why सारी working करने के बाद हम इसको 40% से multiply करें. ठीक है. So we have $3,400, and after that there is depreciation, of course. So depreciation is basically like we have to go back to the question. So here you can see the carrying value. Cafe equipment's cost is $64,000, but its carrying value for the December 2021 is $22,000. Okay, this is basically $22,000. Okay, so this is the net book value. And if you see that we have purchased one more cafe equipment in 2022, which is $8,800. Okay, so we can see that in this note we have information related to this, that both the club equipment and cafe equipment are to be depreciated at 20% per annum. Using the reducing balance method, a full year depreciation is provided in the year of acquisition. So if we purchased this cafe equipment in 2022, okay, so it means that we have to impose 20% as depreciation on that equipment. Okay, so 22,000
was the carrying value. So we know that in reducing balance method, we always take percentage depreciation amount basically on the net book value. We always apply percentage on the net book value. So you can do like this. 8,800, okay. Okay. So you can find the depreciation individually on each asset, because this asset we have carrying value for the 2021. So we don't have any carrying value for 2022. So, but it doesn't mean that it is not depreciated. We have to find a depreciation in 2022. So that is why we have to apply 20% on the carrying value, which is $22,000. Because we purchased one more equipment for the cafe, and the cost of it is $8,800. And in this question, they said that full year depreciation is provided in the year of acquisition. So that is why we have to apply 20% on this also. So you can find depreciation by this method, and you can find depreciation by this method, that you just add $22,000 and $8,800, and after that you will apply 20% on that. Okay, and you have $6,160 as your depreciation expense. You can see 6,160. Okay, so this is basically your all expenses. So after that, you just we have 3,1680 as an expense. So we have to minus 3,1680 from 3,822,000, and we have profit for the year. Why we are saying this profit? Because this is we are making loss and profit and loss statement for the cafe. Okay, and cafe is not working for the welfare for the people. It is basically working for the profit. So that is why we say this amount as a profit for the year. 6,520. Okay. So after that, coming forward to the next question. Prepare the club's income and expenditure account for the year ended 31st December 2022. Okay, so income and expenditure account for the year. Okay, so what type of income a club may earn? Basically, club earn income from the subscriptions, from the life memberships, okay, and also profit from the cafe. So this is very simple, that we can get profit from the cafe from above question, which we just calculated here, 6,520. Okay, so this is our profit for the year. And for subscription, we have to make subscription account, this account, subscription account. So if you guys are aware, we follow short, you can say that terminology or whatever you can say. Whenever you are making any kind of income account, so you follow this terminology. So subscription account is also an income account. You can say that we make APA account. A, P, P, A, or you can say OPO account. O, P, P, O. So O means owing, A means accrued, O means owing, A means accrued, P for prepaid, P for prepaid, P for prepaid, P for prepaid. So balance, if we have balance BD as accrued or owing, so we will record our accrued or owing prepaid balance on the debit side. And if it is prepaid income or as our opening balance, so we would record this on credit side. If we have closing prepaid balance, so we would record as a balance CD on the debit side. And if we are closing accrued and owing amount as an income, so we record it as balance CD on the credit side. So this is very simple. You have been making this subscription account from your O levels. So I just make this account, you can see that. You can see this here from, you can see this from here.
We have subscription owing, we have subscription prepaid, this, and this. This would become in the subscription amount, okay? And annual subscription, $6,800, which is banked, as you can see here. I'm not going to make you understand about the subscription account. You can see very easily, and this is a very easy account. So I don't think so that I should go under depth. So that is why we have basically 69,200 as an income. So we just put it here. So after that, we have live membership. Live membership, basically $5,600. So how we can just calculate? Okay. So here you can see live membership. Life membership was introduced on 1st January 2020. Each life member has to pay $200 on the date of admission. The life membership fee is to be transferred to income over 10 years in equal amounts. The number of new life members admitted each year is as follows. Okay, so how many new members we have? 6, 10, 12, 28 members. Okay. And how much amount they paid as life membership? $200. Okay. $200 they have paid us. So 28 members paid us $200. Okay. And it is basically divided into 10 equal parts because this $200 paid for 10 years. So that is why we have to multiply it by 1/10, or you can say, or one over 10, because why we are multiplying it by 1? Because we are talking about only this year, 2022. So if we are talking about 2022's income, so it means that we have to add only 1 month life membership subscription amount into this, which is 5,600 divided by 10. Okay. So after that, we have profit from the cafe, which is very easy. So this is basically our all income. And after that, we have some expenses. So expenses, we have rent, heating and lighting, which is very simple. We can see this is very simple. Rent, we have to we know that our rent was $1,800 and 60% apportioned to the club. So that is why we have to multiply it by 60%. And for heating and lighting, the same goes, like this is the basically a and prepaid concept, which we just applied on our previous question. This is very simple, and you have to multiply it by 60% because 60% of heating and lighting expense apportioned to the club. So we have $5,100 as an expense. And after that, loss on sale of club equipment, loss. Okay, so coming back to the question, we can see club equipment with a carrying value of $4,800 was sold for $2,000. So carrying value, it means the net book value was $4,800. So it means that we are expecting that our club equipment would be sell for maybe more than $4,800. But unfortunately, we sold it for $2,000. So it means that we gain loss from it. So if it is a loss, if we have loss on disposal, so this will be our expense. So what we have to do is just minus $2,000 from the 4,800. So after that, we will come to know that how much loss we have earned, or we unfortunately we gained from this. Which is $2,800. Okay.
Depreciation of club equipment. Okay, so as you can see, the club equipment, we have carrying value of 76,000 2021, but we don't have any carrying value for 2022. Okay, so what we have to do is, and we also purchase of club, we also purchase one more club equipment for $13,000. सेम गोज फॉर दिस, जैसे आपने यहाँ पे किया था पीछे, यहाँ पे क्लब इक्विपमेंट या कैफे इक्विपमेंट जो भी परचेज किए जाएंगे 20% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा जिस ईयर में उसको एक्वायर किया गया। सो ये सेम और टू सेम मेथड जो है वो उसके लिए भी होगा जो हमने अभी किया है। $76,000 बेसिकली द कैरिंग वैल्यू ऑफ क्लब इक्विपमेंट, एंड 4800 उसमें से ये वो वाला है जिसको हमने सेल कर दिया, तो इसको हम लोग यहाँ से माइनस कर लेंगे और उसके ऊपर किसी भी किस्म की डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में बोलते कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो इस 4800 के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती, बट उन्होंने बोला है कि ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, ईयर ऑफ एक्विजिशन में डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सो 76,000 कैरिंग वैल्यू है, उसमें से 4800 वाला जो नेटबुक वैल्यू का इक्विपमेंट था उसको सेल कर दिया गया, तो इसलिए इसको माइनस किया जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद जो हमारे पास नेटबुक वैल्यू आएगी वो प्योर उन्हीं इक्विपमेंट की होगी जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हम लोग बहुत ही ऑनेस्टली 20% लगा देंगे उनकी नेटबुक वैल्यू, और 13,000 जो न्यू इक्विपमेंट परचेज किया गया उसके ऊपर। तो हमारे पास टोटल जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है विच इज 16,846। ओके, सो दिस इज आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। Okay, so we have 5630 as surplus for the year. Just minus expenses from the income and we have surplus for the year. Okay, challenge. Question done है, next आ जाए, next question है prepare a statement showing the movement in the accumulated fund for the year 2022। ठीक है, accumulated fund जो है वो हमारे पास कितना है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट रेडी करनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट how much amount we had at the start of the year, but we don't have any kind of amount in this question, so it means that we have to find it. So how we can find it, basically all the amount which we have in our bank is our asset. Okay, and you know that we have balance BD here, we don't have any liabilities here in our question, so it means that we don't have to minus anything from it. This is our balance PD 7680, this is our asset basically. Okay, $7680 को ऐड कर लिया जाएगा जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस था, बेसिकली ये आपके पास 2021 का बैलेंस था, 2022 के स्टार्ट में ये बैलेंस आपके पास मौजूद था। दिस इज आवर एसेट, accumulated fund is equal to assets minus liabilities। स्टार्टिंग ईयर में कितना हमारे पास accumulated fund था, we don't know about this, we have to calculate it. So starting year में we know that we have asset which is bank balance in our bank and this is 76,800। इसके अलावा accumulated fund में हमारे पास और कौन सा asset है वो है life membership। At the start of the question, I have told you that life membership would be the part of your accumulated fund, but सिर्फ और सिर्फ उतना पार्ट ही लाइफ मेंबरशिप में आपके accumulated fund में आएगा जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए हम देखते हैं अभी इसके बारे में, ये देखें 2020 में 6 मेंबर्स ऐड हुए, 2021 में
10 मेंबर्स ऐड हुए, 2022 में 12 मेंबर्स ऐड हुए, ठीक है, टोटल 28 मेंबर्स। 2020 में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। 2022 का बेसिकली हम एक्यूमुलेटेड फंड फाइंड कर रहे हैं स्टार्टिंग ईयर का, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 31 दिसंबर 2022 यानी कि ईयर एंड की हम अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्यूमुलेटेड फंड जो फाइंड कर रहे हैं वो फाइंड कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 यानी कि ईयर स्टार्ट का। सही है। सो 2022 में 6 मेंबर्स ने 2000 दिए 10 ईयर्स के लिए, तो इट मीन्स के 2020 से 2022 के स्टार्ट तक, ठीक है, एक मिनट, 6 मेंबर्स थे 2020 में, 6 मेंबर्स थे 2021 में, 10 मेंबर्स थे, ठीक है, 2022 में कितने मेंबर्स थे, एक सेकेंड, 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स। एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो फाइंड किया जा रहा है 1 जनवरी 2022 का, बिकॉज उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट इन द एक्यूमुलेटेड फंड फॉर द ईयर 2022। सो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द एक्यूमुलेटेड फंड फॉर द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ताकि हम उसकी मूवमेंट के बारे में बात कर सकें। 2022 दिसंबर तक हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड कितना है, ठीक है। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप, अब 6 को सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे 2000 के साथ, 2020 तक 10 ईयर्स की 10 ईयर्स की पेमेंट की गई है, $2000 6 मेंबर्स ने पेमेंट की है, तो ऑफ कोर्स इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, लेकिन हम बना रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं 2022 1 जनवरी तक का एक्यूमुलेटेड फंड, तो इट मीन्स कि 2020 2021 2 ईयर्स एक्सपायर्ड, 2020 2021 की पेमेंट एक्सपायर हो चुकी है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 8/10 के साथ। 8 क्यों? क्योंकि 10 में से 2 ईयर्स माइनस हो चुकी हैं, 2022 का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उस लिहाज से। अच्छा, 2021 का आप देखेंगे तो 2021 में 10 मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं, तो इट मीन्स को इसको भी 200 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9/10। 9/10 क्यों, 9 क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज 2021 में उन्होंने मेंबरशिप परचेज की है, और 2022 का स्टार्ट का क्यूमुलेटेड फंड फाइंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स का सिर्फ 1 मंथ ही एक्सपायर हुआ है, 9 मंथ्स अब इसके रहते हैं, सिर्फ 9 मंथ्स की जो पेमेंट है वो हमारी उसमें जाएगी एक्यूमुलेटेड फंड में। जो 1 ईयर की है वो एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन जो बाकी रह गया है वो हमारा एसेट है, तो वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। सॉरी फॉर दिस, एसेट, एसेट तरफ से बोली सॉरी, हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देखें कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज फॉर्मूला है, तो बैंक इज आर एसेट एंड ये लाइबिलिटी है हमारी, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप में जब उन्होंने आपको 10 ईयर्स की पेमेंट की है, तो इट मीन्स कि हम उसको अपनी लाइबिलिटी ही कंसीडर करेंगे। जिस ईयर में उनकी पेमेंट यूज करी जाएगी उस ईयर की पेमेंट को इनकम बना दिया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्लब के लिए, और जो बाकी रह जाएगा उसको लाइबिलिटी बना दिया जाएगा, तो हमारे पास लाइफ मेंबरशिप जो है वो लाइबिलिटी है। आई एम सो सॉरी, मैं फ्लो में उसको एसेट बना के, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, तो 2022 के अंदर 12 मेंबर्स ऐड हुए हैं, उसको हम ईयर स्टार्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे लाइबिलिटी के तौर पे। क्यों? क्योंकि ईयर स्टार्ट में तो अभी वो एक्सपायर ही नहीं हुआ है, ठीक है, ईयर स्टार्ट में बेसिकली अभी कोई भी लाइबिलिटी हम इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2022 के स्टार्ट में ही उन्होंने मेंबरशिप ली है, लाइफ मेंबरशिप, और हम लोग 2022 के स्टार्ट की ही एक्यूमुलेटेड फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स के वो अभी लाइबिलिटी बनी नहीं है, ठीक है, वो तो अभी पेमेंट की हुई है उन्होंने, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो 2000
$7600 जो है वो आपके पास लाइबिलिटी है टोटल इन दोनों की। ठीक है, तो okay, so life membership we have 27600, this is our liability। ठीक है, बैंक इज आर एसेट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी एसेट्स इंक्लूड हैं। अगर आप देखें क्वेश्चन में, अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास नेट टोटल मौजूद था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके एसेट्स का नेट टोटल मौजूद है विच इज 872270। सो एक्यूमुलेटेड फंड का ही ये पार्ट है आपकी। आपने बेसिकली एक्यूमुलेटेड फंड जब फाइंड करना है उसमें से आपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करना है। ठीक है, और हमारे पास नेट टोटल दिया गया था 2021 का जो कि है 87270। तो दिस इज आर बेसिकली एसेट्स minus liability, and this is also our asset. So we have 136470 as accumulated fund 1 जनवरी 2020। तो ये ईयर स्टार्ट का हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये ईयर स्टार्ट का। अच्छा, उसके बाद सरप्लस जो है वो भी आपका पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड होता है, जो कि हमने अभी फाइंड किया 5630 डॉलर। एंड वी हैव accumulated fund at 31st December 2022, which is 142100। So this is our accumulated fund at the end of the year। ठीक है, चलें, तो ये आपके पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है थ्योरी वाला। तो ये बहुत इजी है, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पार्ट, और जो सॉल्व करने वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। और inshallah we will see like other questions in my upcoming videos। So for till then, goodbye।